shifting to the next webinar of today. Thank you. Thank you. Or to Pong Sharma ji. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much for your kind words. Now we are celebrating Take Your Parents to the Playground Day. Very unique day. I don't know how and why they are celebrating, because they are not meeting with their parents, I hope. And there are no playgrounds in every colony also. So a unique day. We have eminent speakers, Professor S.K. Bandyopadhyay, sir, former Director, Medical Education, Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal, and Chairman, Independent Ethics Committee, Kolkata. Dr. Pranjal Joshi, our dynamic pillar of the AYUSH SAMRIDDHI, from Anand, Assistant Professor, Dalia Physiotherapy College. And our respected Madam, Sadhna Vaikarji, Dr. Sadhna Vaikarji, Dean, SAM College of Ayurvedic Sciences and Hospital, Bhopal. It is also very rare combination, sir, that Professor S.K. Bandyopadhyay is our senior guide, 70 plus, and Dr. Sadhna Vaikarji is also of same age. So from new age to senior age, we have to learn so much from this webinar, and no other subject was better than this subject, that physical games for senior citizens. Because when person becomes senior citizen, he feels that he is not able to play games, he is not able to correlate with the modern times. So it is the duty of their children to take parents to playground. Thank you very much, sir. मैं आदरणीय सुशांत बनर्जी सर को सादर निमंत्रण देता हूं. आदरणीय सुशांत बनर्जी सर बहुत एक्टिव हैं, इस एज में भी स्विमिंग करते हैं, टेनिस खेलते हैं, और क्या क्या करते हैं वो खुद बताएंगे. मैं आदरणीय डॉक्टर सुशांत बनर्जी जी को सादर अभिनंदन करता हूं, निमंत्रित करता हूं. Thank you, Dr. Vavan Sarma, my dear brother, my dear friend. Actually, I have been listening in depth detail about the tea session. I was enjoying tea because Dr. Pavan Sarma never takes tea, but I'm very fond of tea, and really I enjoy tea, and unnecessarily I did not enter inside this tea. Because I was not also supposed to, as per the directive of our host. Anyhow, this topic is a very interesting topic, and let me tell you first, let our children take the parents to the playground. Now, first of all, I will tell you, my son used to take me. My son is now 40 years old. But when my son was a small kid, I used to go to the playground with him, and that the story goes back to about 30-35 years back story. Now, the very interesting part is my granddaughter. She nowadays they have been shifted to Mumbai, but till then she was with me for quite some time. Now she is almost 8 years old, and every day she used to insist me, "Grandpa, you please come with me in the playground. You take me to the playground. You take me to the playground." Now the question is, the topic is very interesting because what to do and what not to do about the senior citizen. And in my mind, the definition of senior citizen, though officially it has been declared that after 60, all are senior citizen, be it 70, be it 80, till the last day of life. Everybody is senior citizen once you declared senior citizen at the age of 60. But actually the playground in my mind has got no limit. What Dr. Pavan Shah was telling, that what I do, and what I do is not always very important, but still I will insist on something. But at the same time,
I would like to, I will not take much time, but at the same time, I would like to say some merits and some demerits of the playground. Playground means what? At this age, after 60, what should be the activity in the playground? In the playground, I'm telling you, see, it depends on a person, the person who has been accustomed with sports. I'm very proud to say that I have been, when I was director, then also after my retirement also, I had a team of medical teachers in cricket team, and I cannot show you right now because in the top floor, I have got so many trophies that we have got that after my retirement. And I have the distinction of winning against the students the cricket match by making by striking a sixer in the last ball when 2 runs were required. So however, that's a different thing. But then it depends that whether how much you are accustomed with the sports. Because one fine morning, suddenly you start running and playing football, it will not be allowed. It cannot be allowed. Because because we do not know, first of all, we do not know our cardiac condition. We every day we do not monitor. I have seen many patients, many persons, many patients, those were actually symptomless. One fine morning, they get a severe heart attack. One fine morning, they get a cerebral attack, CVA, suddenly. So we shall have to keep these all things in our mind. For that, what is required is the regular monitoring. Monitoring of what? Every day you cannot go to a cardiologist. Every day you cannot go for CT scan, or every day you for a brain, or every day you cannot go for blood test. But there are certain things you should have a regular checkup. Regular mean at least every 6 months, a person should have a regular checkup. When our parameters are almost under control, you know, actually our life is full of stress and strain. So when our life is full of stress and strain, what actually happens, and due to geographical distribution, the diabetes is endemic, or I would say now it is epidemic in our and this Southeast Asia, not only in India, in Southeast Asia. Hypertension, the same problem due to stress and strain. And these are all silent killers. Gradually and gradually they try to kill. So first of all, we shall have to keep these two broad killers under control. And for that purpose, we shall have to go to the playground. Not playing football 90 minutes, but what we should do, we should, the dictum say is that 50 minutes per week brisk walking is absolutely necessary to maintain your parameters in a normal thing, to maintain your blood glucose level under control, to maintain your blood pressure under control. Unfortunately, some people get some other diseases, some other metabolic disorders, or some organic diseases. That's the different thing. Those who are suffering from with a very high comorbidities, that's the different thing. Otherwise, those who are apparently healthy, I will request everyone to walk down for at least 30 minutes per day, a brisk walk. That is the minimum requirement. Everybody cannot swim, everybody cannot play cricket, everybody cannot play tennis, everybody cannot, of course, not football, and never try to do a very hard, I mean, very, don't give much effort to the sports, because sudden effort can lead to a sudden cardiac arrest. So a senior citizen, many after 6 years, suddenly one should never go for this thing. These are don'ts. So what you do at walking is brisk walking is a best exercise. Beside that,
If you can do yoga, fine, nothing like it. But for that also not indiscriminate, rampant yoga. We shall have to learn yoga, because yoga is now throughout the world, it has been accepted as a very, very, very scientific process. Scientifically, it has been accepted. And so when once anything is scientifically accepted, we shall have to learn the process. And the process learning means is that how much my body permit to do yoga. If I start yoga suddenly one fine morning, that how much and how far, what types of yoga I can do. Therefore, that reason a trained person is required to guide me. If not every day, for at least initial phases, for 5, 6 types of yogas you can do. So there are terms respiratory exercises. And we in modern days, we utter one word for any treatment. Any doctor will tell you, be it Ayurveda, be it any alternative medicine, be it modern medicine, doctor, everybody will tell you that these killer diseases, to manage these killer diseases, lifestyle modification is the first word. This is the part of lifestyle modification. Eat healthy food. Dr. Sharma is very fond of eating healthy food and timely food. And I am not a timely food taker. What he used to say, I think by this time, Dr. Sharma has also taken his dinner. He is nodding his head in not in South Indian style, but in North Indian or East Indian style. That means he has taken already his dinner. So what I want to say that your biological clock should be maintained in a proper way. That is very important. Biological clock, that from morning till night, what we will do, when we will go to sleep, how long we will sleep, when I will wake up, when I will take what, your green tea, when it should be taken. I was just tempting to speak something, but actually there were some very learned speakers on this issue. That's why I did not say much, because that what I was telling you, that the good things and bad things of going to the playground with the children, the same thing happens also in case of green tea. Some good thing and some bad thing. Anyhow, this topic is not of green tea at all. So, my dear friends, what I was going to tell you, please do exercise. Sedentary life is very bad at any stage of life. The problem is that Dr. Sharma has chosen this, but I'm sorry to say, young children, they cannot go to the playground. In many places, they don't find any playground, and at the most, they are not interested in playground. They are more interested in mobile. They are more interested in cartoons. Oh, their life is pivoting on this, and I'm sorry to say, their futures are getting ruined out of this. Who will see you? Parents will have to know. It's fine that children will take to the playground. I will request parents to take children to the playground. What I used to do in case of my son. Now I cannot go every day to the playground with my granddaughter, but every parent should take their children to the playground. This is one. And we were talking about the senior citizen people. Senior citizen, my earnest request, send this message to each and every patient, every person, every able. Again, there is some restriction. I tell you, I give a caution. Those senior citizens who are suffering from arthritis, particularly knee joint severe problem, their problem is more serious. They will have to depend more on yoga, because for them brisk walking may be hazardous. Brisk walking is for normal knee. That thing also you'll have to keep in your mind. And so what to do then? Yoga. And that's why I'm telling you that yoga that you will do with under a trained personnel. Everything needs a training and everything needs an expertise. I could say many things more, and I think there are many speakers, and it's an excellent opportunity to speak. People like you, so many learned people are there from so many places. I could hear
and I am also enriched with the deliberations what I have heard, and it's really an excellent endeavor on the part of Dr. Pawan Sharma. He is very enthusiastic. He is also not young. He is also senior citizen. He has also retired, and now after retirement, he is not sitting idle. He is running a college now at Bhopal. At the same time, he is doing so many things. I really love him, and due to this, his a positive attitude, what he does always. So, Dr. Sharma, you continue with all these your excellent activities. Thank you. And Thank you. I am always with you as usual. Thank you for your patient hearing. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. So now I would like to request Dr. Pranjal Joshi, the young, dynamic, energetic personality from Ahmedabad. Welcome, Dr. Pranjal. Dr. Pranjal. Yes, sir. Yes, sir. I'm joining. Just Welcome. Welcome. आज भोपाल में लाइट नहीं है कई जगह, तो साधना जी लेट जोड़ेंगी. टाइम इज योर्स. वेलकम. You are mute. Your voice is not Hello, coming. sir. Yes. Am I audible now? Yes, yes. Yes, your presentation is visible. Hello. You can go for slideshow. Your presentation is visible. Hello, sir. Great, great Myself. topic. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to thank Dr. Pawan, sir, for giving me this golden opportunity. Today, my topic is recreational physical activities for elderly people. Myself, Dr. Pranjal Joshi, who is Masters in Sports and Musculoskeletal in Physiotherapy, certified in manual therapy in Yoga Sciences and Kinesiotherapy. Currently working as Assistant Professor at Dalia Physiotherapy College. So, what is the fun activities for the elderly? Art and craft, nature, music, fitness, cause related activities, culture, etc. are some of the most important activities we can provide to elderly people for their recreational activities and for their health purposes. In art and craft, we can ask our elderly, most commonly our grandparents, or we can also even ask our parents if they are retired or in the senior citizen age criteria, to perform some of the tasks which helps them to improve their psychological status, physical status, and help improve their cardiorespiratory endurances. In this first column, we see that arts and crafts, to get creative at home, start an upcycling project, sign up for an art workshop, attend art festivals. Nature, pick up gardening, spend some time with nature, participate in nature workshops. Music, listen to the classics, guess the song, sing along like karaoke, learn to play an instrument, join a silent disco. You can also enjoy your own company if you like, but it's rather depressing scenario than to enjoy with your own family. Fitness, keep fit at home, join an exercise group, attend fitness classes. You can also attend aerobic, Zumba, Tai Chi, yoga classes, so that you can keep up the body functions at accurate level. Cause related activities is start volunteering, work for a cause, befriend fellow seniors. In this, recently in Ahmedabad, there are so many running marathons or cyclothons are going on currently at every Sunday in morning, in which elderly people take the part and perform a well capability of activities, and they also show that they are not even yeah, they are not now, they are not so old to perform these activities, and yet they are enjoying their second childhood.
culture, visit some museums, or play old school games, etc. What is geriatric? Geriatric refers to medical care for older adults, an age group that is not easy to define precisely. As my previous speaker has said already, that there is not such criteria that we can rely or categorize that these people comes in old age category, or they are just fine or well, they can perform their physical activities, etc. Aging, pure aging, refers to the inevitable, irreversible decline in organ function that occurs over time, even in the absence of injury, illness, environmental risk, or poor lifestyle choices, such as unhealthy diet, lack of exercise, substance abuse. The definition of recreational therapy is a process of encompassing recreation and activities to help people with a disability or illness. This therapy offers physical and psychological health benefits to help improve general health. It simply means patients feel better because they enjoy recreational activities. What do senior citizens need most? As we all know, the senior citizens need a lot of things like balance and coordination, support, and other activities, some moral support, etc. But one most important thing in particular we can say is love. They all need love because they have already faced a lot of challenges in during their lifestyle. And now, if a youngster or a school-going children or even a college-going children makes a fun of them, they calls them bald, low, or humped back person, or having a scoliotic posture, or we can say in Hindi टेढ़े मेढ़े चलने वाले लोग, लंगड़ा के चलने वाले लोग, इस तरीके की जो चीजें हैं, if we call them like this, they will morally get demoralized and even can go in depression or may attempt to get suicide. We've all heard the term golden years, but what does that mean? It means that our hearts are changing as we age and our bodies are changing too. We start reflecting on what's truly important in life and how we can help others. After all, no one gets out of this world alive. We all just pass through it for a little while. And if you don't believe in afterlife, then the only thing that matters is what you leave behind when you are gone. What are emotional activities for senior? In citizen, it is most important to make them get together with an old friend or neighbors or even colleagues so that they can get excited and talk about their past, enjoy their old funny memories, and can get motivated to live a longer and healthy life. Have a lunch together every day. Take walks together every morning and evening. Go on picnics and other outings at least once per week. Play games such as card, checkers, chess, or even bingo. Fun and engaging indoor activities for senior citizens. In this, I have shown two photos of some photographs in which we can ask our elderly or elderly people in our home to organize and make the things to in such a way that they can adjust it all the things adjust in some of the place so that they can cherish that moment and remember or recall their memories related to that specific things. One of the most engaging and fun activities for senior citizens is organizing. Having a full box full of old photographs can be overwhelming, which can recreate or remember that they were young and what they did in their past to enjoy that moment and savor it. But it's an easy project that can give you a lot of satisfaction in the end. To begin, gather up all of your small items
It can be anything, small toys, it can be instruments, it can be clothes, etc., etc. But in this, we are taking photographs. If there are any you want to keep but don't want to organize yourself, you can always ask a family member or friend to help out. Next, sort through all of your items based on the subject matters. You can categorize, and in this second picture, you can see all the boxes are given specific names and date-wise timing that these photographs were from these memories. Once they are sorted, put them on display somewhere in your home where everyone can enjoy them. Play cognitive improvement games. For elderly, we have already seen that psychological or neurological problems is most common in elderly patients. In America, the most commonest condition one can face is Alzheimer's, in which a person forgets all of his memories and gets stiff and later dies due to less functioning of their body. Indoor activities for senior citizens can be fun, engaging, and mentally stimulating. One of the best ways to improve memory and cognitive function is to play cognitive improvement games. There are many types of cognitive improvement games that are suitable for seniors. Some examples include memory games such as match cards, and crosswords, word searches or chess, snakes and ladders, ludo, carom, detective puzzle games, checkers, etc. Bake or cool, bake or cook, health problems that have hampered their ability to walk, drive, or even do some household chores. They should be encouraged to do what they love as much as possible in order to keep them happy and healthy. One of the best ways to encourage senior citizens is by giving them indoor activities that will make them feel good. One of these activities is baking. It can be done at home, in the office, or even at the senior citizen center if available. Cooking is one of the oldest forms of therapy for seniors because it involves a lot of movement and coordination between both hands and feet, which makes it more interesting than other activities such as watching television or listening to music alone. In this, we can see grandparents are cooking together with their grandchildren, which makes them very happy. The couples are feeling happy as they help each other in making food for their own. Try chair exercises. Here are some exercises that you can try: chair dance, chair yoga, chair tai chi, chair zumba. In dance, patient can just sit and have fun with their music or karaoke, or even you can see jazz. Or we in India we can enjoy more old songs like Mukesh Da or Kishore Kumar or etc. songs, which makes the heart race faster and makes your body move like a pure dance person. Chair yoga, looking for something more relaxing. It's just what it sounds like. Yoga in a chair. You'll feel refreshed and ready for anything after this one. Tai Chi. This one is a little more intense than some of these other options. But if you're up for something with more cardio and flexibility benefits, then this is definitely worth trying. Zumba is always a great workout because it has all kinds of benefits beyond just getting fit. It increases your energy levels, helps relieve stress and anxiety, and improves your mood. Dancing, karaoke, dancing, and other performance arts. If you are looking for a fun activity that can be done by seniors, dancing is a great option. In this picture, you can see an old person is enjoying the steps of the dance with with
his partner. Whether it is dancing in a group or alone, dancing is a great way to get exercise while having fun. It also helps with balance and coordination. Karaoke is another activity that can be enjoyed by seniors who want to sing along with their favorite songs. In this, I would like to add one example. I am currently seeing a Parkinson plus patient in a society where every Saturday all the elderly get together in a hall, very good and recreational hall, in which they have speakers and mic which functions very well. All the elderly people get on the table, make some coffee, some snacks to eat with the coffee or tea, and then they just start a screen in which lyrics appear and the background song start, and they all one to one start singing different types of songs, and they make in their whole week they just plan on what song they are going to play or sing in this next karaoke session, which helps all the elderly people to get improved, and they are already doing very well compared to other elderly people I see as a patient. Most karaoke places offer private rooms where you can sing without worrying about being heard by others, which reduces the stage fear in elderly people. Stretch and balance sessions. Stretch and balance sessions are a great way to keep your senior citizens active and engaged in their community. These sessions are specifically designed to help seniors improve their flexibility, strength, and balance. These sessions are held in indoor areas that have low lighting and soft music playing in the background. Each session begins with stretching exercises that work on the muscles in each participant's arms, legs, back, chest, and neck. After the stretching exercises are complete, participants will be asked to perform a series of balance tests on a balance mat. As my earlier speaker has already said, that if you start exercising or stretching suddenly, you can get DOMS. If the DOMS is appeared in elderly people, they will get tired or fatigued easily, which will encourage them not to exercise or perform any yoga, Zumba, aerobics, etc. exercises, which will further decrease their cardiorespiratory endurances and may cause some orthopedic conditions such as or osteoarthritis, rheumatoid arthritis, etc. This helps participants learn how their body responds when they try to stand up straight with their feet together, or when they move from side to side without losing their balance. In this, I would like to give an example of 73-year-old patient. He is actually not my patient, he is actually my friend from a park in which he performs different types of yogas and other exercises which I can also not perform, as the person is already full of strength and full of excitement that he can perform so many physical activities. He still says, even at the 73 years of age, he still says that I haven't completed my century, so I will stay young and keep up my full good physical activity and physical fitness. Health benefits of recreational activities. It will improve your physical fitness and strength. It will improve depression symptoms, which we can see after retirement in patients, which causes them to commit suicide or even reduce their food intake capacity, and which causes their musculoskeletal problems. Social connections, self-esteem, functional independence, enhancing cognitive abilities. In this picture, health benefits of physical activities for adults, we can see that in immediate, we can see that sleep is improved, less of anxiety, blood pressure improves, and in long term, brain health, which I have already said, neurological or psychological functions improves, and which makes them remember their old memories
They can also write some books, activities which encourages their youngsters, their children or grandchildren to learn something from the old struggle which they have already faced, which will help them to cope up in this current society. Heart health, cancer prevention, healthy weight, bone strength, balance and coordination, etc. Uh, by this, I would like to conclude my session by saying that if you take care of elderly people, they will always take care of you. I would like to share one story in Hindi, which I have learned in my childhood during my schooling. In this story, एक राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा की थी कि कुछ जितने भी राज्य में जितने भी 60 से ऊपर के लोग हैं उन सबको या तो मार दिया जाए या तो राज्य से बाहर गदेड़ दिया जाए, जिसकी वजह से सारे राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। यहीं पे एक लड़का था जिसने अपने पापा को कुटिया में एक कुटीर के अंदर छिपा के रखा हुआ था, जिसकी वजह से राजा को पता ना चले कि कहीं वो क्या बोलते हैं कहीं पे राज्य में कोई कोई बुजुर्ग इंसान है या नहीं है। कुछ समय बाद जब बुजुर्ग सारे चले गए, उसके बाद अचानक से अकाल आ गया राज्य में। राज्य में अकाल आते ही राजा ने तुरंत ही घोषणा की कि जो भी इंसान इसका सही सही सॉल्यूशन देगा उसको मैं बहुत ज्यादा इनाम दूंगा और जो वो मांगेगा वो मुंह बोली कीमत उसको दी जाएगी। तो ये लड़के ने अपने पापा से पूछा कि ऐसे अकाल आया है, हम लोग भूखमरी में मर रहे हैं, ना पानी पानी पीने के लिए है, ना खाने के लिए धान है, हम करें तो करें क्या। तो उसके पापा ने, जो बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर की एज हो चुकी है, उन्होंने उसको सुझाव दिया कि एक काम कर सकते हो, तुम राजा के पास जाओ और राजा को बोलो कि मैं आपको ये इसका सुझाव दूंगा, इसका सजेशन दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त तुम ये रखना कि मेरी जान बख्श दी जाए। और सामने उनको ये बोलना कि जितने भी रास्ते हैं, जो रास्ते इन्होंने बनवाए हैं, उस रास्ते के साइड में पैरेलल में ढेर सारा पानी छिड़का जाए। तो राजा ने बोला कि ये कौन सा बचकाना ये आया सुझाव है। उसने बोला एक बार करके तो देखो। राजा ने तुरंत घोषणा की पूरे राज्य में सब जगह पे पानी छिड़का जाए सड़कों के साइड में। महीने 2 महीने बाद एकदम से वहां पे फसलें उगने लग गई और वो फसलें इतनी अच्छी उगी कि जो राज्य पहले तबाह होने वाला था वो समृद्ध होने लग गया। तो राजा ने तुरंत उस लड़के को बुलाया और पूछा कि क्या है ये सीन, क्या तेरे को कैसे पता चला कि यहाँ पे पानी छिड़कने से ये सब होगा। तो उसने बोला कि मेरे को पहले 2 शर्तें चाहिए, एक मेरी जान बख्श दी जाए और एक मेरे पापा की जान बख्श दी जाए। वो बोलता है ठीक है बख्श देते हैं। उसके पापा जो 65 70 साल के थे, वो आते हैं राज्य में और राज्य में आके राजा के सामने सिर झुका के बोलते हैं कि ये जो है, ये जो सुझाव है जो काम कर गया वो इसलिए क्योंकि जब भी खेत से फसलें राज्य में आती थी तो कुछ फसलें हवा की वजह से उड़ के सड़क के किनारे पे चली जाती थी और वहीं पे उसके बीज जो होते हैं, बीज जिसको बोलते हैं, वो वहीं पे पड़े रहते थे। अगर आप उनको समय पे पानी दे देते हो तो वो उगेंगे और फसलें अच्छी होगी। ये कहानी से पता चलता है कि एक बुजुर्ग की हमारे देश में, हमारे परिवार में ही नहीं हमारे देश में कितनी जरूरत है, कितना ज्ञान भरा हुआ है इन लोगों में जो हमको अभी उनसे लेने की जरूरत है। इसी के साथ मैं मेरे वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। डॉक्टर पवन शर्मा जी को मैं तहे गजब दिल से गजब धन्यवाद गजब करना भाई चाहता हूँ। गजब, एक्सीलेंट, गजब प्रांजल जी गजब। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से और सब कुछ समझा दिया, सब कुछ समझा दिया, बहुत उत्तम। अग्निहोत्री सर, नाउ सेशन इज ओपन। यस सर, थैंक यू सो मच। भाई डॉक्टर प्रांजल, आपने कहाँ से इतना निकाल के लाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीजें। यू हैव जस्ट टेकन दिस टॉपिक एज अ चैलेंज एंड मेड so many information categorically, right from first to sixth: organize, play, congruity, bake or cook, chair exercises, है ना, and dancing and skeletal balancing system. Really, it's wonderful. And थैंक यू सो मच after सर। after listening you, I have got so many important points. Just we can add on because we are celebrating that persons are to be carried to the playground. I was thinking about the outside game. If this is the real
approach and keeping the senior persons busy, it can be done in a other way also. जैसे कि अब बच्चे तो घर में एक ही दो होते हैं, कि अगर बच्चों के साथ ही एक दो तीन और मिल गए आस पड़ोस के भी, तो उनको बिठाल के हम सिंपली बड़ों के बड़े लोग गुब्बारे फुलाने का काम कर सकते हैं एज ए गेम, है ना, घर के अंदर ही अंदर। तो उनको अच्छा लगेगा। शंख बजाना सिखा सकते हैं, बजवा सकते हैं। इट विल अगेन लीड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हेल्थ। बच्चों को सीखा है, तो हम शंख बजाना जानते ही नहीं है। एंड अगेन वन कैन ऑल्सो डू, मतलब जैसे आपने स्टोरी सुनाई जो कि आपको बचपन में मिली थी, तो ऐसे ही अगर बड़े बुजुर्ग कायदे से, अगर वो समझदार है, छोटे 5 साल से 6 साल से ऊपर के बच्चे अगर बैठते हैं साथ में, तो उनको थोड़ा थोड़ा रामायण का पाठ सुना सकते हैं। और उसके बाद जब उनको ये हैबिट बन जाएगी, 1 मास पाठ तक ले गए, तो फिर अगली सेटिंग में या इवनिंग को या नेक्स्ट डे या आफ्टर 15 डेज और 1 वीक उनको अंताक्षरी प्रतियोगिता कर सकते हैं। बच्चे वॉलंटरीली आजकल फिल्म के सॉन्ग्स पर आपस में अपने ग्रुप में करते हैं, कहीं बस में, कभी पिकनिक भी जा रहे हैं, कभी कहीं भी। तो इसमें भी एक उनको उत्साह होगा, उसमें ताली बजवाएंगे, तो ताली बजवाने से भी पूरा हमारा सर्कुलेशन बढ़ेगा और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलस मिलेगा। तो और बच्चे और बुजुर्ग दोनों अपने इन्वॉल्व महसूस करेंगे, एंड दे विल वेट फॉर द टाइम। उनको बताएंगे आज शाम को 7:30 बजे बैठेंगे, अंताक्षरी करेंगे, या सुबह 8 बजे हम शंख बजाएंगे, लाइक दैट। तो सो मेनी अदर गेम्स में आल्सो टेकन अपार्ट फ्रॉम द चेस एंड कार्ड एंड अदर थिंग्स। बहुत अच्छी अप्रोचेस है। आपने कुछ और संभावनाओं पर सोचने के लिए हमको मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। और अब जैसे कि प्रोफेसर पवन शर्मा जी ने कहा है कि नाउ सेशन इज ओपन, एंड हमारे साथ में अब कम उम्र में तो आप ही थे। आज हमारे पास प्रोफेसर कामिनी दीवान जी जुड़ी हुई दिखलाई पड़ रही हैं, और कभी भी नहीं, मतलब आज इतने एंड तक तो जुड़ती नहीं। हम सबसे पहले उनके विचार चाहेंगे अपने दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर। दोनों टॉपिक बहुत ही बढ़िया रहे। तो मैडम कामिनी दीवान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी नमस्कार, थैंक यू जी। आइए, बहुत आज अच्छा था। आज आपको घेर लिया गया, आज आपको बोलना ही घेर है। लिया गया है मुझे बिल्कुल, हम देखते घेरना है इसलिए कर रहे हैं कि आप इस समय तक निकल चुकी होती है। पवन जी फिर कहते हैं कहाँ है, कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे। तो हम घेरना है तो सही को कीजिए। आइए, स्वागत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार पवन जी, नमस्कार आपको। अग्निहोत्री जी नमस्कार। जो भी नमस्कार। सारे जुड़े हैं सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो टॉपिक बताया प्रांजल जी ने, इट वाज वेरी नाइस। एंड जनरली आई डील विद मेनोपॉजल विमेन, सो मुझे इसमें इंटरेस्ट था कि व्हाट इज हिज ओपिनियन एंड व्हाट कैन वी डू फॉर दोज फीमेल आफ्टर मेनोपॉज। सो मुझे भी थोड़ा इनपुट मिला इनसे कि क्या क्या हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। बट आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि थोड़ा सा व्हाट कैन बी द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट आल्सो। हाँ, आफ्टर 60 बहुत सीनियर सिटीजन लॉट मेनी problems like Alzheimer, osteoarthritis, osteoporosis we have seen in our patients. But for preventive aspect also we can inculcate such type of activities. That was in my mind कि हम थोड़ा सा अगर after 50 इसको start कर देते हैं तो it can be preventive for Alzheimer, especially in patients of Alzheimer. We are having lot many issues, like somebody should be there with that person. And nowadays in nuclear family system it is very much difficult for youngsters that how to manage the patients of Alzheimer's if their parents are having this Alzheimer. So if we can do this type of games, activity, indoor games, or this puzzle games, so we can have answer for them. And उसके साथ थोड़ा सा हम, जैसे इन्होंने गेम्स तो बताई, बट मेरा थोड़ा ओपिनियन है कि हम प्राणायाम को भी थोड़ा सा इसमें जोड़ सकते हैं, योग को भी जोड़ सकते हैं। और प्राणायाम में मैंने देखा है कि अगर हम उनको ओम चैंटिंग, डीप ब्रीदिंग अगर बताते हैं तो थोड़ा सा, और भ्रामरी प्राणायाम वो भी थोड़ा सा इसमें उसका इफेक्ट जो है वो देखा गया है। तो वो थोड़ा सा इनके, मुझे लगता है शायद मैंने मिस किया होगा सुनने में, बट ये भी एक हमारा जो कंट्रीब्यूशन अपनी पैथी की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि हम उनको इस प्रकार से डेली, उनकी डेली रूटीन में प्राणायाम को मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी उनको टाइम लगता है, या हम उनको गाइडेड प्राणायाम भी बता सकते हैं जिससे वो उनकी एक्टिविटीज में जो वो हेल्प कर सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट सम जैसे कि डायरी सप्लीमेंट्स वगैरह भी देते हैं, तो हम अपनी औषधि जैसे अश्वगंधा वगैरह हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ में जो अपना रसायन चूर्ण वो भी हम लोग देते हैं पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में। तो इन सीनियर सिटीजन्स में भी उसका ज्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है अगर हम उनको देना चाहते हैं कुछ सप्लीमेंट्स। तो
तो मैं थोड़ा इतना ही बोलना चाह रही थी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी बात भी रखी और अपने सजेशन दिए। आपने बड़ा सेंसिटिव मुद्दा उठाया अल्जाइमर के बारे में, और मैं कहूंगा कि सही बात है, मेल हो या फीमेल हो, सीनियर सिटीजन में उनको इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंट। अगर मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में उठते बैठते उनकी किलकारियां सुनते हैं, उनके पीछे थोड़ा सा भागते भी हैं, तो अल्जाइमर तो आएगा ही आएगा नहीं। दूसरे में छोटे छोटे गमले हैं किचन में, थोड़ा गार्डनिंग में टाइम दे सकते हैं, सूखे पत्ते हो गए उनको हट कट के निकाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ाई कर सकते हैं। और ऐसी जो प्राणायाम वाली बात बताई, वो हमने शंख बजाने से जोड़ा था। उसका ही मतलब है कि हम जो है लंग्स एक्सरसाइज किस किस ढंग से कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि किसका इंक्लिनेशन किधर है। और आपने अच्छा बताया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया या ओम चैंटिंग हो गई, ये और जितने हम एडवांस बढ़ते जाएंगे, बच्चों को संग बिठाना जरूरी है। यही है ना कि जो जनरेशन के दो जनरेशन का जो है जुड़ाव होगा, और वहां पर फिर जो बच्चों को देख के अल्जाइमर्स हो गया या इस टाइप की कोई भी नर्वस सिस्टम डिजीज होगी नहीं, उसी में क्लैपिंग वगैरह भी आ जाती है। तो अच्छा का, और मेनोपॉजल के लिए आपने बहुत जरूरी बात रखी। और रियली हमारा एक स्पीकर फीमेल भी होते तो वो सीनियर सिटीजन बच्चे गुड़िया कैसे ले जाती मैडम हैं। मैडम साधना वायकर जी थी, लेकिन उनके यहाँ हाँ, लाइट नहीं है। अच्छा, ओहो, डेफिनेटली शी माइट हैव टच्ड दिस एरिया। और वो तो बहुत ही अच्छा बोलती हैं और सीनियर है, अनुभवी भी हैं। तो आज दोनों ही 70 के ऊपर रखे थे। जी, मैडम वायकर भी 70+ हैं और एस के बंदोपाध्याय जी भी 70+। वो तो है नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल अपना एकदम यूथफुलनेस दिखला दी। उन्होंने लगा ही नहीं कि आपको बताते रहे कि आप 60 पार हो गए, उन्होंने कभी अपने को कन्फेस नहीं किया हम 70 पार नहीं, हैं। ये हमें अच्छा लगा कि उन्होंने सब बातें आप पर तो कर ली कि अब आप फिर भी बताया कि आप भी कॉलेज चला रहे हैं, मतलब एक्टिव है। मैडम कामनी जी, आप ना थोड़ा अपने आप से दीजिए ना सोल्यूशन इसमें। मेनोपॉजल में आप ज्यादा क्लोजली जान सकते हैं। बिल्कुल उस बिल्कुल, समय हम उस करते समय हैं। महिलाओं को अपनी छोटी बच्चियों के साथ में टहलना है, यस घूमना है, उनको यस कुछ यस ज्ञान या देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी संस्कृति और भारतीय कल्चर खत्म होता जा रहा है, तो छोटी छोटी अपनी कहानियां हैं, हमारे घरों में मनाए जाने वाले त्योहार, या इसलिए आज यस यस। अल्ट्रा मॉडर्न होके नहीं कर रहे हैं। इससे भी टेंशन होती है बहुओं को, सासों को, सबको। तो उसमें थोड़ा आप प्रकाश डालिए, अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा सा ये इमोशनल बॉन्डिंग में भी हेल्प जी करता है, जी जैसे जी। कि जनरेशन गैप जहाँ आता है, और बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट में तो करता ही करता है, पर सीनियर सिटीजन्स की इमोशनल उसमें भी हेल्प करेगा आई थिंक सो, जैसे आपने बताया मुझे। तो मैं थोड़ा इस पे भी अपनी जो पेशेंट्स है, फीमेल पेशेंट्स, उनको बता सकती हूँ। थोड़ा बहुत अच्छा ओपिनियन आपका आया है, तो आई विल फोकस अपॉन दैट ऑल्सो। जी, जी। क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ी होती हैं। बहुत अच्छा लगा। अब हम आपके धन्यवाद करते हैं। प्रोफेसर सोमानी साहब हमारे साथ जुड़े, रामपाल सोमानी जी, एक अनुभवी हमारे बहुत बड़े राजस्थान से जुड़ते हैं, और उनका स्वागत है ऑडियो नहीं आदरणीय। जुड़ा है सर, उनका ऑडियो नहीं। ओ माय, ओ भाई, अभी अच्छा अच्छा। सोमानी साहब, अच्छा, हाँ, ऑडियो नहीं जुड़ा है। अ, चलिए आशीष मिश्रा जी, बहुत दिनों बाद आपके आपके उपस्थिति दर्ज हो रही है। आप चर्चा करिए, फिर हम प्रोफेसर रामदास जी को इनवाइट करते हैं उसके बाद में, क्योंकि अभी वो सीनियर में नहीं है, अभी वो रनिंग में है, बट थॉट तो उनके पास हो गई। तो हमारे आशीष मिश्रा जी जरूर सीनियरिटी को टच कर गए हैं। तो डॉक्टर आशीष मिश्रा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी। मैं तो बीच बीच में आज जुड़ रहा हूँ और हम्म, हम्म, कर रहा था, क्योंकि मैं लगा था, एक्चुअली मैं बिटिया के ही ट्रांसप्लांट के चक्कर में हाँ लगा, हाँ। कहीं गया हुआ था, मैं वहां से ही लौटा हूँ आज ही, और फिर वहीं जा रहा हूँ मैं। लेकिन आप अपने अनुभव दीजिए आज की दोनों वेबिनार पर, अगर आप बस सुन सके हो। चाय तो आप पीते ही होंगे, चाय पर चर्चा कर लीजिए पहले, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिटिक्स हाँ, सर, आप बिल्कुल म्यूट है। सच्चाई तो ये है कि सर करीब 23 साल हो गए मैंने चाय छोड़ दी, बिल्कुल चाय नहीं पीता मैं किसी ये का। लो, देखा देखी। सर आप म्यूट है, पवन जी आप म्यूट है। ये तो बढ़िया हुआ। क्या नहीं नहीं बात है, सर, कोई तो साथी मिला। हमारे सुनील मुझे जोशी जी ने आज तक चाय नहीं पी है, उन्होंने है, टेस्ट यहाँ से। हाँ, प्रोफेसर मैंने सुनील 23 साल जोशी, से सर चाय नहीं ली है बिल्कुल भी। बस डॉक्टर मुझे, जेके पेनुली चाय नहीं पीते हैं, बहुत सारे लोग चाय नहीं पीते। जी, गढ़वाल वाले ने देखा अक्सर। जब से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि या चाय के अंदर दो ही तत्व मेन हैं, एक भूख हरण और एक दर्द हरण। तो अगर 100 डिग्री से ऊपर बॉयल हो जाएगी टी लीफ, हम्म, तो वो जो है आपके भूख हरण हो जाएगी। हम्म, और अगर जो है आपके 100 डिग्री से नीचे रहेगी, तो वो, क्योंकि उसके अंदर कैफीन का पार्ट आ जाता है और वरना निकोटीन का पार्ट आ जाता है। निकोटीन का पार्ट आ जाने से जो है आपके वो इंटेस्टाइन को इरिटेट कर देता है और डाइजेस्टिव जूसेस को जो है चौपट कर देता है, इसीलिए ये खाना खाने के बाद में भूख नहीं लगती। जो हमारे यहाँ का ट्रेंड है
कि चाय को काढ़ा बना करके पीने का, बहुत उबाल करके, वो हमेशा नुकसान करती है। लेकिन जो ये डिपेक्स वाली चाय है जी ये इसीलिए नुकसान नहीं करती। ये बताया गया है कि चाय जब हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी भारत में, तब भी जो है आपके अंग्रेज 3 एक्ट में जो है आपके गर्म पानी लौट करके ऊपर से चाय पीते थे। इसी कारण से वो चाय पीने के बाद में फ्रेशनेस आती थी और भूख भी नहीं मरती थी उससे। तो यही कंडीशन थी। लेकिन हम लोगों के यहाँ का पैटर्न है कि जब तक कि चाय काढ़ा बना करके ना पी जाए तब तक समझ में नहीं आती है। तो स्ट्रॉन्ग। बस मैं छोड़ चुका था। और यही था कि उसमें अगर जरूरत है तो थोड़ी सी दूध मिलाया जाए उसके पार्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अदरवाइज नहीं। बाकी हर्बल चाय मैं जब तब ले लेता हूँ, तो वो प्रज्ञा पे वगैरह जो इस टाइप की आती हैं, तो वो जो और इस बनती हैं उनको मैं यूज जी करता रहा। और इस पर बताइए थोड़ा, बच्चे बच्चे छोटे गुड़िया बुड्ढे आपको ले जाते हैं वहाँ प्ले ग्राउंड में कि नहीं? जी प्ले ग्राउंड में छोटे बच्चे ले जाते हैं आपको कि नहीं? आज का दिन दूसरी वेबिनार पर। बस मैं अपने प्रोफेशन की वजह से प्ले ग्राउंड में नहीं जा पाता, मैं अपने घर में ही प्ले ग्राउंड तैयार कर लेता हूँ अच्छा। और रहता हूँ मैं। मेरा कोशिश रहती है, और आमतौर से तो मैं जो मेरे साथ में बच्चे पेशेंट्स में भी आते हैं, मैं उनको भी और अपने परिवार के बच्चों को भी बिल्कुल, थैंक मतलब मैं अपने आप को किसी भी हालत में ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि यार तू बूढ़ा हो गया। बहुत बढ़िया। तो है ना? करने पे आपके विचारों से नई चेतना मिली, नई ऊर्जा मिली। स्वागत है आपका, नमस्कार। आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर रामदास पीवीजी फ्रॉम कोल्लम with his important comments and suggestions on both the topics of today's webinar. Professor Ramdas ji, welcome. Namaskar. Professor Ramdas ji, you are hearing me? Professor Ramdas ji, namaskar. I think he is taking time. So, Professor Nishant Shukla ji, namaskar sir. Your comments are also very important, and we have got two topics today. Yes, please. स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो चाय के बारे में है, और चरकाचार्य ने स्वागत। चरकाचार्य ने बात ही शुरू की है चाय से, तो चाय पे तो जो है वो बात बनती है, और जहां पर उन्होंने संकलन किया है वहां पर भी जो है वो चाय मांगी है, भवन की छात्र। और चाय के लिए एक दूसरा भी जो है, जो भी संसारी है, जो भी सदगृहस्थ है, उनके लिए चाय की आकृति, इसका रेफरेंस मुझे पूरा याद नहीं है, पर कुछ श्लोक इस प्रकार से है, संभावितस्य चाकीर्ति ही मरणात् अपि रिच्यते। तो ये चाय की अपकीर्ति तो जो है वो मृत्यु तुल्य है। तो सदगृहस्थ को तो चाय पीनी ही चाहिए, इसके और कुछ भी जो है वो छोड़ सकता है, चाय को नहीं छोड़ सकता। तो सबको चाय के दिन पर खूब अभिनंदन। दूसरी बात, जो एक्सरसाइज के बारे में, खास करके ओल्ड एज, जीरियाटिक एज ग्रुप के लिए दोनों स्पीकर्स ने बातें रखी, दैट वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी। और हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी वेलबींग, उसके लिए एक्सरसाइजेस का जो है वो स्पेशली इम्पोर्टेंस है, और इसको जो है वो जुटलाया नहीं जा सकता। ओनली द थिंग इज दैट आज थोड़ा जो है उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमें उस प्रकार से उन अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी कि जहां पर वयस्क जो है ये जाकर के, वृद्ध जाकर के एक्सरसाइज कर सके। बस दिस इज ओनली फ्रॉम माय पार्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। आपने चाय के लिए एक परिभाषा नई बागेश्वर बाबा ने दी। आपकी अदालत में आए थे, केटली गर्भ सम्भूतम चीनी पत्री सन्मितम, ऐसा करके, और चाह पे उनने पूरी शायरी सुनाई। तो मैं निशांत जी को बोलूंगा कि वो जरूर देखें और उसमें से चाय की नई निरुक्ति स्वीकार करें। अग्निहोत्री सर। एक और भी बहुत बड़ी निर्भरता की बात है कि भारत का कोई भी रेलवे स्टेशन बिना चाय के संभव नहीं है। इसलिए चाय कोई पीता हो या ना पीता हो, भारतीय रेलवे स्टेशन पर चाय अवश्य मिलेगी। बस अड्डे सेकेंडरी है, वहां इसके आगे कहानी
आप सभी के मन मस्तिष्क में पहुंच चुकी है, उसको पुनरुक्ति दोष नहीं करना है। लेकिन तो बड़ा अच्छा चर्चा रहा। और चाय पीना रखी, लेकिन चाय की उपलब्धता, भारत एक चाय प्रधान देश हो गया है अब समय तक। मैं रामदास जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर रामदास जी, आर वी ऑडिबल टू यू? डॉक्टर रामदास पीवी, I hope he is not with the gadget. अग्निहोत्री सर, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। सॉरी, डॉक्टर नितिन उमलिया जी, आप दोनों ही पॉइंट टॉपिक पे चर्चा करिए। आपके ही हम क्लोजिंग वर्ड्स मान लेते हैं, समय भी हो चुका है। हम लोग आजकल समय से अपनी वेबिनार कंप्लीट कर पा रहे हैं, इसकी तसल्ली है। और डॉक्टर नितिन उमलिया जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, धन्यवाद सर। तो सर, जैसा कि बड़ा अच्छा टॉपिक था, ये कॉमन टॉपिक था कहने के लिए, पर हमारी शुरुआत, दिन की शुरुआत ही चाय से होती है हमारी, जिसको हम प्रज्ञा पेय या जो भी कहें, अलग अलग मापदंड में मान सकते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से चाहे जो भी हिसाब से। तो मैं पहले थोड़ा बहुत बोल चुका हूँ, उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि एक्चुअली चाय को एक एनर्जेटिक फॉन्ट के रूप में हमारा यूज किया गया। फॉन्ट कल्पना है हमारी, हिम कल्पना, उसके रूप में हम लेते हैं। तो मुझे जोब जी का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि वो तरह तरह के हमारी द्रव्यगुण से संबंधित औषधि वाली पेया बना रहे थे वो। तो औषधि वाली पेया का बहुत अलग ही रिजल्ट है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण भी है और आतुरस विकार प्रशमनम दोनों है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चाय का इतना ज्यादा चलन है कि वहां तक भी पहुंच गई और उसमें औषधि भी आ गई, जो कि आयुर्वेद का सही प्रयोजन है, सही यूटिलाइजेशन है। ये अगर ऐसा होने लगे तो सब जगह, जैसे अभी कुछ बुडापेस्ट में ही है और बाकी जगह नहीं है, कुछ बड़ी बड़ी सिटीज में भी है। मैं भी देखता रहता हूँ, जिंजर टी, लेमन टी और भी बहुत सारी टी वगैरह, होली टी, बेसिल टी, ऐसा सब रहते हैं। जागरी टी भी रहती है, सब कुछ। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आने लग गया है सब जगह। इस पे मैं बोलना चाहूंगा, अभी हमारे इंदौर में भी बहुत सारे शॉप्स खुले हैं। एक येवले चाय वाला, अमृतुल ऐसा करके भी बहुत पॉपुलर हुआ है यहाँ पे। एक MBA चाय वाला भी बहुत पॉपुलर हुआ है। यानी इसको इग्नोर कहीं नहीं किया जा सकता कि इसमें बहुत सारे लोग पीते नहीं है, मतलब बहुत लोगों का बहुत पसंद है चाय का पीना। तो इसी में बस हम यही बोलना चाहेंगे कि आयुर्वेद थोड़ा जुड़ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। प्रज्ञा पेय वगैरह तो है, पर बहुत लिमिटेड, सीमित लोग पीते हैं उसको, तो उसका दायरा बढ़ जाए, बस मैं इसी में मुझे प्रसन्नता मिलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरा वाला हमारा वेबिनार था कि कैसे बुजुर्गों को बाहर ले जाएं, उनको एक्सरसाइज प्रॉपर करवाएं और कैसे उनको कंपनी भी दें, बच्चे दे या दूसरी जनरेशन कंपनी दे। तो इसमें मैं बोलना चाहूंगा, हमारे भारत जो है पहले से ग्रामीण परिवेश में रहा है, और ग्रामीण परिवेश में संयुक्त फैमिली का चलन बहुत ज्यादा रहा है। संयुक्त फैमिली हमेशा रही है, उसमें बड़े बुजुर्ग भी रहते थे, मिडिल के बच्चे भी रहते थे, बच्चों की जनरेशन, नीचे भी जनरेशन रहती थी। तो बड़े बुजुर्ग निकल गए खेत वगैरह काम करने या जो भी जॉब करते हैं उसमें निकल गए, और बाकी लोग, उनके बड़े बुजुर्ग नाती पोतों को खिलाते थे और उन्हें ही बाहर ले जाते थे। तो ये हमारे यहाँ बहुत पुराना चलन है, हमारे यहाँ ये रहा है पहले से। वो घुमाने ले जाते थे, थोड़े बहुत एक्सरसाइज भी कर लेते थे या जो भी कहना चाहिए। लेकिन अब जो है न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गया है। अब न्यूक्लियर फैमिली की वजह से अब वो चीज नहीं है, बिल्कुल एक ही फैमिली है, उन्हीं के बच्चे हैं और उन्हीं के वो। तो न्यूक्लियर फैमिली में आपको अटेंशन देना पड़ेगा बुजुर्गों के ऊपर भी। उन्हें क्या यूज करना चाहिए, बाहर निकलने पे सबसे अच्छी तो उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाएगी। प्राणायाम का जरूर जोड़ दें, प्राणायाम जरूर करवाएं उनसे, और अगर थोड़े से ओबेज हैं तो कपालभाति भी करवाएं उनसे। इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीजों के स्टेप है, लिटिल बिट एक्सरसाइज उनके अकॉर्डिंग कराएं, ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं कराना है, बहुत हल्की एक्सरसाइज उनको करवाएं। जॉगिंग वगैरह बहुत अच्छा है, वो जॉगिंग बहुत तेज चल के ना करें, बहुत धीमे धीमे अपने कदम, जो भी उनका नॉर्मल स्टेप रहता है, गेट रहता है, उसी गेट के अकॉर्डिंग चले वो। और अपनी स्फूर्ति और ये सब रहना चाहिए। उन्हें फ्रेश जूस वगैरह मिले, कुछ एनर्जी टॉनिक भी मिले चाय के अलावा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, ये न्यूक्लियर फैमिली की देन है कि आज हमें ये करना पड़ रहा है। और जबकि कंबाइंड फैमिली में ये बहुत पहले से चलन रहा है। वो लोग पहले से ही मिलते थे, घुले मिले रहते थे, वो निकल जाते थे मार्केट, बच्चे को लेके भी, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो बहुत पहले चलन था हमारे। लेकिन अब समय बदल गया है, अब जरूरी भी है। फादर मदर वहां जाना नहीं चाहते, जहां बच्चा जॉब करता है, फॉरेन में है तो वहां जाना नहीं चाहते। तो अब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई है।
तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा ये दायरा बढ़ गया है, जो हम अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे। बट पेरेंट्स को कम से कम एडवाइस, जहां भी रहें, फोन और मोबाइल ये बहुत कॉमन हो चुका है। अब हम ना रह के भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, तो हम थोड़ा संपर्क में रहें, अच्छे कंसल्टेंट से संपर्क करें, उनके उम्र के हिसाब से उन्हें जो सही हो वो एक्सरसाइज बताएं, और उनके हैबिट और डाइट और सबका पालन करवाएं उनको। तो यही मैं गुजारिश करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कई दुकानें चाय की ऐसी है कलकत्ता में जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अभी पोस्ट डोडा का छिलका डालते हैं। तो आप कहीं की भी चाय पी लीजिए, जी वो जी 20 जी रुपए जी, की चाय बिल्कुल डालते हैं। आप वहीं पीने जाएंगे बार बार, और उनकी दुकानें रात को 3-3 बजे तक खुली रहती जी है। हाँ। तो ये भी एक नया एस्पेक्ट है जी चाय जी में। जी, बिल्कुल मैं अब अग्निहोत्री सर से सही, सुनना। ये धन्यवाद सर मैंने आपका। भी बहुत सुना है सर। अब जी, ऐसा ही होता होगा। ये सत्य है, बिल्कुल बहुत सही है। आजकल टापरी टापरी टाइप की दुकानें चलने लगी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, 2 महीने हुए होंगे, हमारे हरिद्वार में भी वॉकिंग साइड पे हम जाते तो वहाँ पे एक सरदार लड़के ने खुली। देखते देखते 20 30 बाइक और स्कूटी खड़ी होने लगी, लड़के लड़कियां सब आके पीने लगे। 15 रुपए देते। एक एक तो कुल्हड़ का चल पड़ा है चलन। तो एक कुल्हड़, और कुल्हड़ भी सामान्य जिनमें पहले हम लोग दूध पीते थे, आजकल वो फैंसी कुल्हड़ आ गए, थोड़ा हार्ड टाइप में फिनिश्ड किए हुए, जैसे नहीं कि प्लास्टिक कोटेड भी हो, ऐसा कुछ। एक चीज। दूसरी चीज, आपने न्यूक्लियर फैमिली वाली बात कही। अब स्थिति ये हो गई न्यूक्लियर फैमिली में, अपने ही घर के छोटे बच्चों के लिए अननोन को रखना पड़ता है, जो उसको लुक आफ्टर करता है और घुमाने ले जाए बच्चों को। 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को स्कूल बस से बिठाए, उतारे, खाना बनाए, मालिश करे, लिखाए, उसको नहलाए, सारा काम करे। 24 घंटे की, जिसको नैनी बोलते हैं। तो आजकल नन्नी की स्थिति ये हो गई, बहुत विचित्र स्थिति हो चुकी है। संयुक्त परिवार तो बिल्कुल चले सही ही आप। बात सर। और आपने बस एक ही बात कही कि भाई बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारे सीनियर हैं, जिन्होंने हमको इस काबिल बनाया, तो उनके प्रति बच्चों का कर्तव्य है कि उनकी वो केयर करते रहें। घर पर भेज देते हैं पैथोलॉजी का लड़का, वो ब्लड सैंपल ले जाता है, रिपोर्ट आ जाती है, कंसल्टेशन ऑनलाइन कर लेते हैं अपने कंसल्टेंट से, और थोड़ा लुक आफ्टर करते हैं। पैसे की दिक्कत ईश्वर के पास सब तरफ कोई नहीं है, तो बात बन रही। लेकिन आज आपने अपने विचार रखे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़ते रहिए, जुड़ा करिए, और बहुत से टॉपिक पवन जी, प्रोफेसर पवन शर्मा जी लाते हैं। और कल थोड़ा संभालिएगा, बताते हैं आजकल वो भद्रा चल रही है सभी कॉलेज तरफ, तो वो काम कंप्लीट हो गया टाइम से। भले ही छोटे छोटे सेशन की आजकल अपनी वेबिनार होती है, अच्छा रहता है। और सबका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। और नई नॉलेज के साथ हम लोग जुड़े, अच्छा लगा। आप सबका धन्यवाद।